chemistry last time, and we talked about the definition of the glass, that it is physically rigid undercooled liquid having no definite melting point and sufficiently high viscosity physically to prevent the crystallization, and chemically it is defined as the union of the non-volatile inorganic oxides resulting from the decomposition and fusion of alkali and alkaline earth compounds and other glass constituents. So we talked about this. We talked about the discovery, that it was discovered many centuries ago, and its application, obviously it finds application and is becoming and became a huge industry in the world, particularly in the construction industries and automobile industry. Uh, Composition of the glass, this is mainly made of the lime, silica and soda, but individually glass material may be different from each other based upon their types. So we talked about their types as well, like the fused silica, which is obtained by the high temperature pyrolysis of the silicon tetrachloride, or fusion of quartz and pure sand. Alkali silicates, this is also called this one soda glass भी इसको कहते हैं. This is obtained from sand and soda ash. Simply they are melted together. Soda lime glass, this is manufactured uh, from the different constituents like silica, calcium oxide and sodium oxides. This is used in window glasses, automobile flat glasses. And then we talked about the lead glass, in which the lead content is very high rather than the other materials. Borosilicate glass, borosilicate में B2O3 material डाला जाता है, सिलिका भी होता है और सोडियम ऑक्साइड भी होता है. Then we talked about the special glass. Special glass, this is have we talked about this special glass? I think special glass is colored and coated opal, translucent, safety, optical, photochromic glass, and glass ceramics are especially special glass. These are the glass which are translucent in nature. मतलब लाइट गुजर सकती है बट यू कैन नॉट सी थ्रू दैम. ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्पेशल ग्लास. तो इसके पर बहुत सारे टाइप्स हैं, मतलब फोटोक्रोमिक ग्लासेस भी हैं, सिरामिक ग्लासेस भी हैं, कलर्ड और कोटेड ग्लासेस भी हैं. तो ये सारे जो हैं ये स्पेशल ग्लासेस में होते हैं. ग्लास फाइबर्स के बारे में भी हमने पढ़ा था कि ग्लास फाइबर जो होते हैं, दीज आर द फाइबर मटेरियल ऑफ द ग्लास and they are resistant to weather conditions. ठीक है, and they are also made industrially. So methods of manufacturing of the glass. Manufacturing procedure may be divided into 4 major classes. जी. The special class हो the fiber class clear नहीं. So example ज़्यादा सी. Special glasses are window glasses. Normally we talked about this in detail. Like the window glasses, you are using transparent glasses जिसमें लाइट गुजर सकती है, आप उसमें देख भी सकते हैं. ठीक है, लेकिन एक ग्लास ऐसा होता है विंडो ग्लास जो आप उसमें फ्लावरिंग होती है, ऐसे उस पर इसके ऊपर काम किया जाता है. ठीक है, सो दैट इज स्पेशल ग्लास. ऐसे मतलब लाइट तो गुजर सकती है, आप उसको देख सकते हैं कि उसमें कोई है, अंदर है, बट यू कैन नॉट सी थ्रू देम. सो दिस इज कॉल्ड स्पेशल ग्लास. ट्रांसलूसेंट का मतलब यही है. ठीक है, और फाइबर ग्लास जो है ये हम यूजुअली यूज करते हैं. ये जो आजकल लोग इससे
ऐसे वेदर शीट्स बनाते हैं उसके लिए, ये बायर लॉन्स के लिए इसमें ये फाइबर ग्लास लगाते हैं। तो देयर इज फाइबर ग्लास, उसका मटेरियल जो होता है वो साय ग्लास फाइबर का बनता जो साय वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। है। जी। यस सर। So these are the methods of manufacturing. The manufacturing procedure may be divided into four major phases. ग्लास की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी चार phases होते हैं. Number one is melting, number two is shaping or forming, three is annealing, and four is finishing. So the first one, melting. Glass furnaces may be classified as either pot or tank furnaces. मेल्टिंग जो है इसका ऑब्वियसली ग्लास जो है ये बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, मतलब इसके जो मटेरियल है रिएक्शंस जो हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे होते हैं, तो आप इसके लिए यूज़ करेंगे फर्नेस। ठीक है, फर्नेस जो होता है ये एक हम कहते हैं कि दिस इज इंस्ट्रूमेंट और टैंक विच इज रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो फर्नेसेस जो हैं ये हम डिवाइड करते हैं इनटू टू टाइप्स, वन इज पॉट फर्नेस, द नेक्स्ट वन इज टैंक फर्नेस। Pot furnaces with an approximate capacity of 2 ton or less are used advantageously for the small production of special glasses or where it is essential to protect the melting batch from the products of combustion. पॉट फर्नेस जो है ये इसकी कैपेसिटी 2 टन से या उससे कम हो और ये हम स्मॉल प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, they are employed principally in the manufacture of optical glass and art glass by the casting process. इसमें कास्टिंग प्रोसेस होता है जिस तरह गोल्ड में होता है। ठीक है, तो उसमें भी कास्टिंग प्रोसेस होता है, इसमें कास्टिंग प्रोसेस होता है। वो भी पॉट फर्नेस यूज करते हैं, इधर भी पॉट फर्नेस यूज होता है। सो दिस इज द this pot furnace, this is used for art glass and optical glass. The pots are really crucibles made of selected clay or platinum. जो पार्ट्स होते हैं इनके जो जिनको हम पार्ट्स कहते हैं, ठीक है, वो पार्ट्स जो हैं वो मतलब उनको एक्चुअली हम उनको क्रूसिबल्स कहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री वर्ड्स में, लेकिन जनरली लोग उसको पार्ट्स कहते हैं तो हम भी इधर पार्ट्स लिख देते हैं। सो दे आर मेड ऑफ क्ले आर प्लाटिनम। ठीक है, इन दो मटेरियल से बनाया जाता है, या तो क्ले से बने होते हैं या प्लाटिनम मटेरियल से बने होते हैं। Because they are very resistant to heat, the glass forms a pool in the hearth of the furnace, across which the flames play alternately from one side and the other. The fine glass is worked out of the opposite end of the tank. ठीक है, मतलब इसमें जो द ग्लास बनता है तो वो तो मेल्टेड फॉर्म में होता है, तो वो तो एक साइड से ये एक फर्नेस लगा होता है, उसमें फ्लेम्स के उसमें होता है, ये पड़ा होता है, फ्लेम्स के अंदर पड़ा होता है। तो इसमें फिर एक साइड पे ऐसे एक एंड जो है वो ऐसे बनाया जाता है कि उससे ग्लास का जो मटेरियल होता है वो नीचे आ जाए। ठीक है, जो टैंक फर्नेस होता है, पार्ट फर्नेस का तो पूरा एक बर्तन होता है उसको निकालना पड़ता है, लेकिन टैंक फर्नेस में इस तरह नहीं होता। टैंक फर्नेस में इट इज़ अ काइंड ऑफ द हर्थ, मतलब एक पूल सा होता है। ठीक है, और उसमें एक तरफ से फ्लेम्स डाले जाते हैं, दूसरी तरफ से ग्लास मटेरियल जो होता है वो नीचे निकलता रहता है। द ऑपरेशन बीइंग कंटिन्यूअस, इसमें पूरा ऑपरेशन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, मतलब फ्लेम भी साथ साथ चल रहे होते हैं, ग्लास बन रहा होता है और वो नीचे आ रहा होता है। In this type of furnace, as in the pot furnace, the walls gradually corrode under the action of the hot gas. अब हीट बहुत ज़्यादा होती है इसमें। ठीक है, जनरली फर्नेसेस में हीट बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो इसके वॉल्स जो हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू यूज़ जो हैं ये थोड़े थोड़े करोड़ होना शुरू हो जाते हैं, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं।
The quality of the glass and the life of the tank are dependent upon the quality of the construction blocks. ठीक है, तो अगर करोड़ हो गए तो फिर क्वालिटी ऑफ ग्लास जो है वो ख़राब हो सकती है, क्योंकि रेगुलर हीट जो है वो उनको प्रोवाइड नहीं हो सकती. For this reason, much attention has been given to glass furnace refractories. Small tank furnaces are called DARE tanks and supply a DARE's demand of 1 to 10 ton of molten glass. अब इनमें भी टैंक फर्नेसेस में भी फर्दर जो है स्मॉल टैंक्स भी होते हैं, जिनमें स्मॉल टैंक फर्नेसेस जो होते हैं उनको हम डेयर टैंक्स भी कहते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन का डिमांड पूरा कर सकते हैं, जो 1 से 10 टन तक मोल्टन ग्लास प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, मतलब मेल्ट फॉर्म में जो ग्लास होते हैं. दे आर हीटेड एदर इलेक्ट्रोथर्मली और बाय गैस. ठीक है, ये टैंक भी जो होते हैं ये या तो हम गैस से इनको हीट करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी से. ठीक है. नाउ प्रॉब्लम्स विद furnace. Problem: the temperature of a furnace just starting production can be raised only certain increments each day, depending upon the ability of the refractory used to stand the expansion. ठीक है, मतलब ये तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि इसके जो मटेरियल्स होते हैं वो करोड होना शुरू हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल जिससे ये टैंक बना होता है वो कितने अरसे तक चलते हैं. वंस द रीजनरेटिव फर्नेसेस हैज बीन हीटेड, a temperature of at least 120 degrees centigrade is maintained all times. ठीक है, इसका जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होता है ये फर्नेस का वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम होता है. Most of the heat is lost by radiation from the furnace and a much smaller amount is actually expended in the melting. ठीक है, ज़्यादातर हीट जो है वो ऐसी इससे निकलता है और कुछ हीट जो है वो ग्लास में यूज हो जाता है. Unless walls are allowed to cool somewhat by radiation, however, that their temperature would become so high that the molten glass would dissolve or corrode them. ठीक है, मोल्टन ग्लास का भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो वो भी इन मटेरियल्स को ख़राब कर सकता है जो वॉल्स इनके बने होते हैं. सो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो टेम्परेचर है. ठीक है, तो वो मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं, जो टैंक्स बने होते हैं, फर्नेसेस बने होते हैं, तो वो असल में ख़राब होते हैं, जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं. तो इसका थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ग्लास के जो मैन्युफैक्चरिंग में है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है. तो इन प्रॉब्लम्स को आपने अवॉइड करना है. To reduce the action of the molten glass, water cooling pipes are frequently placed in the furnace walls. अगर आपने थोड़ा सा इसको ज़्यादा अरसे के लिए चलाना है तो आप इनके लिए वाटर कूलिंग पाइप्स लगा दें ताकि फर्नेस के वॉल्स को वो कूल कर सकें. Shaping or forming, the second step. We talked about this, that methods of manufacturing is comprised of melting, and the second point is shaping. So we talked about the melting, that melting is done either by pot furnace or tank furnace. What is pot furnace and what is tank furnace? We talked about this in detail. What are the problems with the furnaces? We talked about these as well. Now the second step of the glass industry is shaping or forming. Glass may be shaped by either machine or hand molding. ठीक है. अब जो ग्लास आता है तो वो तो एक्चुअली मेल्ट फॉर्म में होता है, ये तो मेल्टेड फॉर्म में होता है. तो आपने इसको शेप करना है कि इसको क्या बनाना है. तो शेप करने के लिए या तो दो तरीके हैं, या तो आपने मशीन यूज़ करनी है या हाथों से करनी है. The outstanding factor to be considered in machine modeling is that the design of the glass machine should be such that the article is completed in a very few seconds. ठीक है, तो अगर आपने मशीनों को यूज़ करना है
तो उसमें आपने मशीनों को पहले डिज़ाइन बताना है कि वो किस तरीके का डिज़ाइन बनाना है ग्लास से, ठीक है, और किस तरीके का डिज़ाइन बनाना है और कितनी टाइम में बनाना है। तो ये कहते हैं कि यूजुअली ये जो टाइम होता है, जो बनाने का टाइम होता है मशीन का, ये 5 सेकंड्स में होना चाहिए। During this relatively short time, the glass changes from a viscous liquid to a clear solid. ठीक है, क्योंकि ग्लास जो है ये बहुत जल्दी कूल हो जाता है और फिर सॉलिडिफाई हो जाता है, तो इसलिए शॉर्ट टाइम होना चाहिए ताकि शेपिंग शॉर्ट टाइम में होनी चाहिए ताकि ग्लास सही तरीके से शेप्ड हो जाए. It can therefore be readily appreciated that the design problems to be solved, such as flow of heat, stability of metals, and clearance of bearings, are very complicated. अब इसमें जो प्रॉब्लम आती है मशीन्स में, वो ये होती है कि ये तो मेल्टेड फॉर्म में होता है ग्लास, तो ये जिस जगह से गुजरता है तो उस जगह में अगर ये कूल हो जाए तो जो मशीन होती है उसकी बियरिंग्स भी क्लॉग हो जाएंगे, मतलब वो सफाई उनकी फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर आपने तोड़ना है वो चीज़ों को, ग्लास को तोड़ना है, फिर से साफ करना है, एक टाइम पे चला जाएगा उससे ग्लास मेल्ट फॉर्म में चला जाएगा, दूसरे टाइम में आपने उसको साफ करना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है क्लियरेंस। सेकंड जो है स्टेबिलिटी ऑफ मेटल्स, मतलब इसमें जो मटेरियल यूज़ होते हैं तो वो ग्लास के साथ कैसे मतलब विथस्टैंड कर सकते हैं इनकी हीट को या नहीं, और फ्लो ऑफ हीट इज़ ऑब्वियसली अ बिग प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें जो है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं कि इसकी सफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है जो मशीन यूज़ होते हैं फॉर शेपिंग और फॉर्मिंग. The use and success of such machine is an outstanding tribute to the glass industry. Most common types of shaped glasses are, ठीक है, ये जो हम कहते हैं कि शेपिंग करते हैं तो आपके पास जो मोस्ट कॉमन शेप्स आते हैं तो वो ये होते हैं. नंबर 1, विंडो ग्लास. For many years, window glass was made by an extremely arduous hand process that involved gathering a gob of glass on the end of a blowpipe and blowing it into a cylinder. The ends of the cylinder were cut off and the hollow cylinder split, heated in an oven and flattened. पहले ज़माने में तो ये लोग हाथों से करते थे विंडो ग्लास को बनाने का, ठीक है. उसमें क्या करते थे, ग्लास जो है ये स्टिकी मटेरियल होता है, सो इससे एक चीज़ मतलब गॉब जो है वो पिक करते थे, एक उसको हम क्या कहते हैं, एक, और फिर उसको लेके आते थे और सिलेंडर में डालते थे, ठीक है. सिलेंडर को जब कूल हो जाता था तो इसको फिर थोड़ा सा हीट करके वो ग्लास को हम शेप कर देते थे कि इससे शेप्स बन जाएं, विंडो ग्लास के शेप्स बन जाएं. The tedious manual process has been entirely replaced by continuous process like. ये जो है ये प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें हैंडमेड ग्लास जो होता है ये थोड़ा मुश्किल से बनता है, तो इसलिए फिर इसके बाद जो है मशीन से जो बनना शुरू हुए हैं तो इसमें two processes are mainly involved. The one is called Fourcault and the second one is called float process. Float glass, ये हम window glass की बात कर रहे थे. Now the float glass. Float glass was developed by Pilkington brothers in England. It is a fundamental improvement in manufacturing high quality flat glass. फ्लोट ग्लास जो है इसको हम फ्लैट ग्लास भी कहते हैं, ठीक है. सो दिस इज एक्चुअली फ्लैट ग्लास, विंडो ग्लास ही है, लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है. सो इट वाज मेड बाय Pilkington brothers in England for the first time. It has long been known that a fire polished glass has superior reflectance and wear qualities. The float process employs the tank furnace melting system in which raw materials are fed into one end of the furnace and the molten glass passes through the refining zone into a narrow canal that connects the furnace with the bath.
ठीक है। इसमें एक्चुअली इस प्रोसेस से जो हमारे पास ग्लास आता है वो साफ सुथरा और उसकी रिफ्लेक्टेंस पावर जो है वो सुपीरियर होती है। ठीक है, आपने देखे होंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास बने होते हैं। कुछ कहते हैं कि ये ग्लास जो है इसमें आपको ऐसे रिफ्लेक्टेंस नज़र आएगी, कुछ होते हैं ऐसे थोड़े से रफ रफ नज़र आते हैं। तो रफ रफ ग्लासेस जो नज़र आते हैं दे may be prepared by hand process the other processes। ये जो है ये प्रोसेस आपको साफ सुथरा ग्लास देगा। इसमें क्या होता है, इसमें हम टैंक फर्नेसी यूज़ करते हैं मेल्टिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, मटेरियल्स जो हैं टैंक में एक तरफ से डाले जाते हैं और दूसरी तरफ से आपके पास मोल्टन ग्लास बन के आता है। और मोल्टन ग्लास जो वो बनता है तो ये हम एक बाथ टाइप का मटेरियल एक जगह बनी होती है तो उसमें ये डायरेक्टली उसके साथ कनेक्ट होता है। Rate of flow is precisely controlled by automatically raising or lowering a gate that spans the canal। ठीक है, इसमें गेट लगाया जाता है ताकि ग्लास का रेट जो है, जो फ्लो रेट है उसको हम कंट्रोल कर सकें। The molten glass is conducted onto and along the surface of a pool of molten tin in a non-oxidizing atmosphere under closely controlled conditions of temperature। इसमें हम जो है इसमें ये यूज़ करते हैं टेन का, इसका पूल बनाया जाता है और इसके ऊपर ये ग्लास जो है ये आता है और डिपॉजिट होता है। द कंट्रोल्ड हीटिंग मेल्ट्स आउट all irregularities and produces a glass with both sides flat and parallel। इसको कंट्रोल तरीके से हीट किया जाता है ताकि पूरा ग्लास जो है ये बिल्कुल आपके पास स्मूथ और पैरेलल साइड्स के साथ जो है प्रोड्यूस हो सके। The next one is wired or pattern glass। In pattern glass manufacture, the molten glass flows over the lip of the furnace and passes between metal rolls on which a pattern has been engraved or machined। अब पैटर्न या वाइड ग्लास जो होते हैं ये हम क्या करते हैं, ये तो उसी तरीके से बनते हैं लेकिन इसके ऊपर मशीन से डिज़ाइन बनाए जाते हैं। ग्लास के ऊपर डिज़ाइनिंग करते हैं। आपने बहुत सारे ग्लासेस देखे होंगे जिनके ऊपर डिज़ाइंस भी बने होते हैं, ग्लास भी होता है और उसके ऊपर डिज़ाइन भी बना होता है। The rolls forms the glass and imprint the pattern in a single operation। Such a glass diffuses the light and ensures a certain amount of privacy। ये ग्लास भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें लाइट तो आ सकती है, मतलब लाइट होता है लेकिन इसमें दिखाई नहीं देता। सो it is actually for the private places which recommends it for use in rooms, doors and shower closures। ठीक है, particularly rooms में यूज़ करते हैं, doors में और shower enclosures में ये यूज़ किया जाता है। So these are the different types of the shapes which are produced for the glass material। uh, we will be talking about the other two processes in detail in our next lecture। If you people have any question regarding today's lecture, you may ask।